Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, हर्ष रंजन। नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों की बात करेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज क्या हुआ, और खबरों की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं सीनियर इकोनॉमिक एनालिस्ट प्रकाश चावला। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। नमस्कार। And now let's begin today's edition with the headlines in English. Thank you, Harsh. Yes, let's begin with the headlines. Domestic benchmark indices slump over 1%. Sensex tanks over 830 points. Nifty closes below 24,200. US markets, along with Asian and European markets, rally following Donald Trump's victory in the US presidential elections. And global crude oil prices slip for second consecutive session. Brent crude trades at $74.24. घरेलू शेयर बाजारों में 1% की गिरावट। सेंसेक्स 836 अंक तो निफ्टी 285 अंक गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका सहित अन्य एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में बढ़त। और कच्चे तेल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन मामूली गिरावट। ब्रेंट क्रूड $74.24 पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजारों में आज 1% की गिरावट रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 836 अंक गिरा है और 79,542 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 285 अंक की गिरावट रही और ये 24,199 पर रहा। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में लगभग 0.5% की गिरावट रही। सेंसेक्स पैक की 30 कंपनियों में से 28 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में बंद हुए। विस्तृत रिपोर्ट के साथ लालिमा। Domestic benchmark indices today slumped over 1%. Meanwhile, the investors awaited the US Federal Reserve's interest rate decision scheduled to be announced later today. The 30-share BSE Sensex tanked 836 points or 1.04% to close at 79,542, while the NSE Nifty 50 shed 285 points or 1.16% to settle at 24,199. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in negative territory. The mid-cap index slipped over 0.5% and the small-cap index lost over 0.4%. In the Sensex index, 28 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Tata Motors dropped over 2.3%, Tech Mahindra shed 2.2%, and JSW Steel as well as Sun Pharma both fell nearly 2%. Conversely, the only two gainers were SBI Bank, which added over 0.5%, and TCS gained over 0.2%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors ended with losses. In the top laggards, metal declined over 2.5%, utilities dropped over 1.8%, and commodities lost over 1.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 1,821 companies advanced and 2,134 declined, while 98 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 108 companies hit their 52-week high, while 7 hit their 52-week low. So, Prakash ji, yesterday, after Donald Trump's victory as the President of the United States, what happened? Yesterday, the markets had gone up. आज ये क्या हुआ, नीचे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग टू आस्क दिस क्वेश्चन। वेल, जैसे इसको बोलते हैं ट्रम्प ट्रेड, तो जो ट्रम्प ट्रेड है वो एक पार्टी हो रही थी, कल बड़ी पार्टी हुई, बिल्कुल, तो पार्टी कुछ ज्यादा ही हो गई कल।
तो उसका थोड़ा सा फिर वो थोड़ा सा उतरना था उसका नशा, तो उतरा। और लेकिन आज क्या हुआ है कि काफी मार्केट्स में अभी भी तेजी बरकरार है. Several markets, whether it's, of course, US is opening now, must be opening now, but the US futures indicated it's again on the stronger side. Europe did well. Asian markets were mixed. India was not doing well today after 2 days rally. Ji. One of the reasons is that, there was a profit taking. Then there was also this. See, the market has been reacting to a situation where situation of fundamentals. The fundamentals are quite okay, but what has happened in the past few months, that the market had run ahead of the earnings. After all, it is the fundamentals which should drive the market. Logically. Yes. Sometimes emotions and the sentiments drive the market to an extent which it becomes unsustainable. So there was this situation where market was correcting anyways. It was a balloon. Not balloon. It would not be correct to say it was a balloon or a bubble. It was only trying to adjust itself to the ground reality of earnings. After all, there is something called price to earning ratio. Yes. What is the price in the market as proportion or as a ratio of its earning per share? So in several cases, the PE ratio had really shot up so high, it was becoming unsustainable. So market was anyways correcting itself. That is what happened. Now after the Trump trade party, now again, the fundamentals have come into play. Let's see how it moves on from here. But the overall impression is that Trump is going to be pro-India. Trump's winning his victory is going to be in favor of our country. Free trade agreement was going to be signed, which was left midway after the other president, Joe Biden, came to power, and many other issues. So we all thought that because whatever happens in US has a ripple effect all over the world, and we thought that should affect India also positively. So why has ये इतनी जल्दी क्यों नशा उतरा? नहीं ऐसा नहीं. I'll tell you what. The markets होती हैं, they don't behave like they don't react like that. You got to be realistic in. After all, it's not pro India or against India. It won't be even correct to say whether the previous president or the president in office is against India. No, it's not. There are perceptions. There are strategic. India and the US have been strategic partners. We have a very comprehensive strategic partners, which in any case remains in place. And you might say that you've got better prospects. You can further improve it. That's a strategic way of looking at it. Now, when it comes to market takes a realistic view. Two things. One is the impact of Trump administration on the overall financial markets of the world, including India. Right? Right. Now, what is that he has promised in his election campaign? And he has come up. He's got a sweeping victory. Yes. He's got his party's got a majority in Senate. Right. Now he is not going to be bound by any limitations. He's going to be a very strong president. Under those circumstances, he is yes. But I heard his victory speech yesterday. He was sounding very conciliatory. He meant business. He wants to what he called a kind of a fix America. So his focus is going to be on economy of America. Now it remains to be seen what path it takes to somehow fix America or fix America's economy. So that path has to be watched very carefully by other trading partners. In fact, his personality has been such that there are two things right now which are totally unpredictable. One is the Sensex or the stock markets. The other is Mr. Trump. Yeah. So they are unpredictable. Yes. Under those circumstances, one has to wait and watch
when his administration is inaugurated in January, wait and watch, and obviously there will be some indication as to who will be members of his team. So wait and watch, but we remain optimistic. प्रकाश जी, अगर हमने देखा कि एक भारत को छोड़कर सारे लगभग एशियाई मार्केट और यूएस मार्केट में आज बढ़त है, जाहिर सी बात है ये ट्रंप का इफेक्ट है। मार्केट में जो एक नर्वसनेस सी थोड़ी सी छाई हुई थी इन्वेस्टर्स के बीच में, उसमें कमी आई है, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि एक बहुत मेजर विक्ट्री है, बड़ी जीत है ट्रंप की। साथ ही यूएस फेड के भी आज फैसला आएगा, हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट का है, जैसे कि मार्केट उम्मीद कर रही है। इससे भी मार्केट को क्या एक बूस्ट मिला है। और दूसरे साथ साथ हम मार्केट के वैल्यूएशन की जो आप बात कर रहे थे, कंफर्टेबिलिटी लेवल की वैल्यूएशन की, उसकी भी हम थोड़ी सी और समझना चाहेंगे। पीई रेशियो अगर पिछले आप 6 महीने का हम देख रहे हैं तो निफ्टी 50 का 22.2 के आसपास है, लेकिन अगर इस महीने का देखें, जैसा आपने भी बताया 22.7, यानी कि वो ½ से भी ज्यादा बढ़ा हुआ है अपने एवरेज से। क्या इसका भी असर है? ये दो सवाल हैं यूएस में। ये जो आपने कहा ना पी रेशियो ओवरऑल हेडलाइन फिगर, वो हेडलाइन फिगर है। क्या है सेक्टर्स में, कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में 150 तक है पी रेशियो, एक कंपनी का 400 है जी। वो सस्टेनेबल नहीं है। तो वो गिरती है जब कंपनी, तो इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो सेक्टरल में चर्निंग होती है। तो ये बात तो सब मानते हैं कि इनफैक्ट हमारे जो रेगुलेटर है, जिस हिसाब से हमारी मार्केट चल रही थी, थोड़ी सी कंसर्न हमारा रेगुलेटर सेबी को भी महसूस हो रही थी कि खास तौर पे ये जो फ्यूचर्स सेगमेंट में ट्रेडिंग हो रही थी, और वो अगर आप किसी भी ब्रोकरेज अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले सेबी की वार्निंग आती है, और उसमें ये बोलता है कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। आपको ये समझ आई कि नहीं आई? फिर आप उसमें बोलते हैं येस गॉट इट, तब आप बढ़ते हैं आगे ट्रेड करने के लिए। तो ये मैंडेटरी वार्निंग आती है। जी जी। तो उस सूरत में अर्निंग्स जो थी, अर्निंग ऐसा नहीं क्योंकि अर्निंग खराब चल रही है, लेकिन अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं योर मार्केट वाज मच अहेड ऑफ द कर्व, अर्निंग कर्व। तो उसको करेक्शन तो चाहिए ना। वो बड़ी हेल्दी चीज है हमारी मार्केट के लिए, हेल्दी चीज है, हेल्दी चीज है। अब आप सवाल आया कि भाई ट्रंप का मैंने जैसे जिक्र किया कि ट्रंप, जाहिर बात है एक बहुत बड़ी इवेंट हुई है ग्लोबल लेवल पे, एंड इट वाज मच अवेटेड इवेंट, और उस इवेंट ने काफी सरप्राइज भी दिया है। आफ्टर ऑल ये माना जा रहा था कि बड़ी टाइट फाइट है, लेकिन टाइट तो नजर नहीं आई, वो तो एक तरह का स्वीपिंग विक्ट्री हुई। तो उस सूरत में अब क्या है कि जो ट्रंप साहब की पर्सनालिटी है वो इस तरह से अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती है। इवन उनके जो अलाइज हैं, जैसे यूरोप है, अब यूरोप में अब आजकल एक टर्मिनोलॉजी चली हुई है कि यूरोप भी वांट, दे आर मीटिंग, दे वांट टू ट्रंप प्रूफ देयर strategic alliances within Europe and Trump proved their economies, because Trump has openly declared that I am going to slap a high level of tariff, 10% at least across the level, or tariff on all American imports and up to 60% on China's imports. और इसका भारत पर भी असर पड़ेगा भाई 10% सब पे पड़ा तो हमारे पे भी असर पड़ेगा। हम हमारे पे भी, तो हमको भी अपने आप को ये सब तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए वेट एंड वॉच होगा। लेकिन क्या होता है, कोई ऐसे क्रूड तरीके से नहीं लगाता कि आपने ओवरनाइट इशू कर दिया ऑर्डर, ऐसे नहीं होता। नेगोशिएशंस होते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स, ट्रेडिंग ऑफिशियल्स मिलते हैं, ट्रेड मिनिस्टर्स आपस में बात करते हैं, गिव एंड टेक होता है। जो ट्रेड, मैंने तो WTO कवर किया है काफी अरसे से। आई हैड अटेंडेड 3 WTO मिनिस्टीरियल मीटिंग्स वेयर हार्डकोर नेगोशिएशंस टेक प्लेस बिटवीन मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस, टैरिफ को लेके। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि काफी कुछ गिव एंड टेक होगा, और नया एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उसमें हमको भी तैयार रहना है कि किस तरह से हमको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी। Right. So our exports, 2 questions from my side. One, where do you see our exports from India going? And secondly, the world has been trying subtly or not so subtly to challenge the dominance of the dollar. Like we are now trading with many countries in rupee, and some countries are keeping their reserves in rupee. We are even buying oil in rupees. So do you think that dollar dominance with Trump's America first attitude will take a kind of a backseat? नो, वो एक जो आपने कहा ना, 2-3 मुद्दे हैं इसमें। जो आपने योर
your question relating to the dollar dominance, at this stage it is more of a academic issue, mind you. It's not on the ground. It doesn't seem to be taking shape. Yes, there have been bilateral arrangements. For instance, with Russia, we got a bilateral arrangement. With several countries, we got but bulk of our trade happens in the hard US currency. And mind you, the dollar has is unique in its character. Dollar is not only a currency, it is an asset. Yes. So for instance, India has been witnessing a lot of outflow for institutional investors from here for the last several weeks. Yes. One of the reasons is now with the Trump coming in and the dollar gaining strength. So one of the reasons could be that the funds are flowing from the emerging markets back to US into dollar assets, right? So that is an academic debate. When your second question related to exports, anyways, India enjoys a surplus with the US. Our bilateral trade enjoys a surplus. So it depends. It is up to our skill whether we maintain that surplus or we come under any kind of a hardcore bargain kind of a thing. Yeah, we need to export products and services like IT industry. Yes. So many people are employed. But overall our balance of trade, we enjoy a surplus. That's great. And the pressure would be that, okay, you reduce your surplus. Right. और इसी समय बता दें कि विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 37 पैसे दर्ज की गई। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 104.87 पर कारोबार कर रहा था। एक नजर एशियाई बाजारों पर भी साथ ही साथ डाल लेते हैं। ज्यादातर एशियाई बाजारों में आज बढ़त रही है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.5% की बड़ी बढ़त पर था। हांगकांग के हैंगसेंग में भी 2% की बढ़त रही है। सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी लगभग 2% बढ़ा। दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में भी मामूली बढ़त दर्ज की गई, लेकिन जापान के निकेई में 0.25% की गिरावट रही है। इस बीच यूरोपीय बाजारों में भी बढ़त बनी हुई है। जर्मनी का डैक्स 1.3% की तेजी पर कारोबार कर रहा है। फ्रांस के कैक 40 में भी 0.5% की बढ़त चल रही है। लंदन का फुटसी 100 जो है वो मामूली बढ़त पर कारोबार कर रहा है। Niti Aayog CEO BVR Subramaniam today said that the micro, small and medium enterprises, MSMEs as we call them, sector contributes around 40% in total exports made by the country. Speaking during special industry interaction on the ease of doing business and cost of doing business in New Delhi, Mr. Subramaniam highlighted the challenges faced by MSMEs like capital, regulations and technology. He said that Niti Aayog is working to develop an ecosystem for electronics and auto components to address these challenges. Speaking about the country's economic transformation, Mr. Subramaniam said that investments in infrastructure and capital expenditure played a pivotal role in the country's progress. He said the country's population will fuel its growth in the coming years as India is having the world's largest working age population. He also emphasized that efforts should be made to attract foreign investors by simplifying the process and regulations. और हमने बात कर ली भारतीय शेयर बाजारों की, हमने बात कर ली एशियाई यूरोपीय शेयर बाजारों की। अमेरिकी शेयर बाजारों में भी उछाल रहा है। कितना उछाल रहा है लालिमा, आपके पास इससे यूएस मार्केट से संबंधित कोई अभी सूचना आई है? जी बिल्कुल है। While US stocks rallied yesterday with all major indices closing at record highs following Republican candidate Donald Trump's victory in US presidential elections. The Dow Jones Industrial Average surged over 3.5%, Nasdaq Composite climbed nearly 3%, and the S&P 500 jumped over 2.5%. बिल्कुल, थोड़ी देर पहले अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे और वही ग्लोबल शेयर मार्केट्स का हाल रहा है। आने वाले समय में हम थोड़ा डिस्कशन इस पे और करेंगे, लेकिन अपने श्रोताओं को कुछ और खबरों से रूबरू कराते चलते हैं। हाल के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों में संशोधन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब यदि कोई मौजूदा ग्राहक
जिसकी केवाईसी हो चुकी है उसको अगर उसी बैंक में दूसरा खाता या दूसरे प्रोडक्ट के लिए कोई खाता खोलना हो तो उसे नए सिरे से फिर केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी ग्राहक जब अपना केवाईसी कराए या उसमें कोई अपडेट दे तो बैंकों को 7 दिन के भीतर उसे केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में भेजना अनिवार्य होगा। Chalo, that's what you call ease of doing business. Yeah, ease of living. Yeah, ease of opening an account, whatever. All right, let's move on. Nepal and India have agreed to expedite hydropower projects and advance cooperation on energy, water resources and other key areas. Nepalese Energy and Water Resources Minister Deepak Khadka, who visited India from November 3rd to 6th, made comments yesterday during a brief talk with media persons at Tribhuvan International Airport in Kathmandu. During the visit, Khadka met India's Power Minister Manohar Lal Khattar and Energy and Water Resources Minister C.R. Patil and discussed advancing cooperation on energy, water resources and irrigation. During the discussion, the Indian side agreed to provide necessary assistance to Nepal to provide drinking water and irrigation facilities to the people of hilly areas of the Himalayan country by installing solar panels. The two sides also discussed matters relating to electricity, trade, construction of transmission lines and flood control mechanisms, while Nepal has requested permission to use an Indian transmission line to export 40 megawatt of electricity to Bangladesh as per a tripartite agreement. Prakash ji, always our neighbors come into focus and we have a little complex relationship with almost all our neighbors. Now let's talk about Nepal. How do you view this bilateral talk and agreement between Nepal and India? It's a very good agreement because neighbors are neighbors. They are our smaller countries, and we got to be good towards them. And this, in fact, this is a very important and strategic relationship that we have with them. And being a larger economy, we are the fifth largest economy of the world, $4 trillion economy, and these are all small neighbors. And if we extend our hand of cooperation towards them, is going to be good, generate a lot of goodwill for us, as also a lot of commercial mutual benefits to both the countries. Right. विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और जाम्बिया के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री मुलाम्बो हाइम्बे ने आज लुसाका में जाम्बिया भारत संयुक्त स्थायी आयोग की 6ठी बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा और समीक्षा की। दोनों पक्षों ने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों की सराहना की और इन्हें और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक में भारत ने जाम्बिया में सूखे की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और 2500 टन मक्का की सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख किया। यह सामग्री बहुत जल्दी जाम्बिया पहुंच जाने की उम्मीद है। और प्रकाश जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि भारत लगातार छोटे देशों की, पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, जाम्बिया तक हम सहायता पहुंचा रहे हैं और कई क्षेत्रों में कृषि सहित ऊर्जा क्षेत्र में हम उनको सहयोग कर रहे हैं। हमारा अफ्रीका में इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है और हमारे बड़े हिस्टोरिकली बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं और आउटरीच जिसको बोलते हैं। और हमारा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हमारे पास सामर्थ्य है, वर्थ है, और हम जब हमारे पास सामर्थ्य है तो क्यों ना किसी नेबर्स को या किसी भी जिन मुल्कों के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ क्यों ना आउटरीच करके और उनको अगर उनकी किसी तरह की हेल्प चाहिए, इमदाद चाहिए, क्यों ना की जाए। और ये जो स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा है, सराहनीय है और हमारी बड़ी और जाम्बिया के साथ बड़े अच्छे हिस्टोरिक रिलेशंस हमारे रहे। And of course, India was instrumental in getting South Africa in the beginning of G20 summit itself, something which one would have expected कि आखिर में होगा, वो पहले से ही हमने इनको ले लिया। बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है, बड़े मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है जी जी। और हमारे लिए वहाँ पे अच्छे रिलेशन करना हमें भी जरूरत पड़ती है। मिनरल के ऐसे मिनरल्स हैं। ज़ाम्बिया इज वेरी रिच इन कॉपर, एंड कॉपर इन माइंड यू इन द न्यू electrification of vehicles and the copper is very important raw material, and Zambia is very rich in economy. They got copper mines, and so after all, it's not
each country has its own strength. Yes. And you have to leverage on each other's friendship and strength. And in the spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, we can always handhold South Africa and Africa in general, because the perception again is that they are exploited by the rich West. Well, that's how. And then, because after all, what is Global South? Global South is nothing but holding hand of each other. Right. Global South. It's in the spirit of Global South. Right. We should keep on doing such measures. Right. All right, moving on. Well, Minister of State for Communications Chandrasekhar Pemasani has said that satellite communication, SATCOM, will not compete with ground-based mobile networks, but it will complement them. Addressing the third edition of the Indian Space Conclave in New Delhi, the minister said SATCOM should be seen as complementary to terrestrial network technologies such as 5G and 6G for achieving widespread connectivity. Mr. Pemasani said 5G and the upcoming 6G combined with SATCOM services can connect both the ground and the sky. And well, moving on, in other news, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has underlined the country's transformation in digital infrastructure, manufacturing and skilling sector. During his meeting with the CEOs and business leaders in Sydney today, the minister said that robust business and investment linkages are key drivers of comprehensive strategic partnership between India and Australia. Indeed, our foreign relations with, it's not just the neighbours, but far off Australia also improving. Well, with all the major economies, we are after all, we are a major trading partners of most of the major economies of the world. And Australia, we enjoy a very intense kind of relationship. We are strategically close to each other. We are economically close to each other. And we have a very important relationship in education. A lot of our students are studying in several Australian universities. And driving the economy. Of course, yes. Of course, that's true. But again, Australia too is very rich in mineral resources. And a very important economy. So the cooperation between India and Australia is always welcome, and we should move in that direction, continue to move in that direction. Right. I look at the oil prices now. Oil prices slipped for second straight session today. Brent crude was trading 0.91% down at $74.24 per barrel, and WTI crude lost over 1% to trade at $70.85 per barrel when reports last came in. सोने की कीमतों में आज बढ़त दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 77,020 रुपए देने पड़े। चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी रही है। 1 किलो चांदी की कीमत 91,240 रुपए रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.13% बढ़ा है। 76,758 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर आपूर्ति वाली चांदी की जो कीमत थी 0.12% बढ़कर 90,926 रुपए प्रति किलोग्राम पर वो चल रही थी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, समय कम है। प्रकाश जी, आप आए स्टूडियो में, आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। All right, so that was news about gold and silver. And before we close, friends, here's our reminder of the headlines. Well, domestic benchmark indices slump over 1%. Sensex tanks over 830 points. Nifty closes below 24,200. US markets, along with Asian and European markets, rally following Donald Trump's victory in US presidential elections. And global crude prices slip for second consecutive session. Brent crude trades at $74.24. घरेलू शेयर बाजारों में 1% की गिरावट। सेंसेक्स 836 अंक तो निफ्टी 285 अंक गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका सहित अन्य एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में बढ़त। और कच्चे तेल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन मामूली गिरावट। ब्रेंट क्रूड $74.24 पर पहुंचा। आज के लिए मार्केट मंत्रा में इतना ही। कल शाम 6:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
Market Mantra. Market Mantra.